Another thing I've always wondered, Dure, is for young actresses or even actors, male or female, how it's like, when you're two unmarried people in a romantic drama story that goes crazy, it blows up completely, or people are shipping you together and all of that. ये नहीं होता जब आपका co-star या कोई एक बंदा married हो. कम होता है, right? You work with फिर भी दानिश होता है तैमूर. नहीं? नहीं, वो हिस्टेरिया नहीं होता. दानिश तैमूर के साथ लोग जरूर शिपिंग थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जोड़ियां बना दें और निकाह पढ़वा दें और वो सब कुछ होता है. Do you think, and now with Saval Yar Priya, Feroz and Ahmed both are married now. So shayad wo na ho. So as an actor, and of course looking for popularity as well as critical acclaim, but also looking for कि लोगों को भी अच्छा लगे, वो invest भी हों, वो fandoms भी invest हों. Is it better and safer to be with like potential couples, or is it safer and better to be कि एक safety बनती है अगर आपके married co-stars हों? Am I So, making any sense at all? I know like the way that when a script comes to you and when two characters are pitched, I doubt anybody thinks about that whether Hmm. this person is married, unmarried. Yes, I don't even think it's a plus because the multiple hits that we have seen all around the world, Yeah. most of the time both actors are married. Yeah. Or for example, when you think Fawad and Mahira were Fawad Totally. was married That's when. true. So I doubt that this reflects upon the chemistry that's made. Mm. But yeah, the fandom and the shipping gets intense when you're unmarried, for Yeah. sure. Yeah. Uh, but that's all around the world. It's just not Pakistan. Did it ever make you uncomfortable during Ish Murshid? No, And no, you were no. See, so I'll tell you something about acting, and especially how I see acting, is that uh, it's between action and cut, right? So at that time, you need to be the most comfortable with your co-actor, especially if it's a romantic analysis kind of scene. And that comfort was always there between me and Bilal from day one. Uh, so it was like, हाँ हम हंसते बहुत थे सीन्स के दौरान बिकॉज हम दोनों को हंसी बहुत जल्दी आ जाती है Huh. बट बस What और was what was the toughest scene? Do you remember? कोई है memories हैं? टफेस्ट सीन प्रॉबेबली वही होंगे जिसमें हम लोगों को हंसी के दौरे पड़ गए होंगे और फिर हम वो सीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे हाँ. वरना अदरवाइज कोई ऐसा नहीं हाँ. बड़ा स्मूथ दादा भी साथ हंस रहे होते थे हमारे हाँ. बड़ा कंफर्टेबल माहौल था माहौल था. मैंने एक दफा सेट भी विजिट किया था. वाकई बहुत कंफर्टेबल माहौल था. मतलब कोई चिल सीन चल रहा था. पता ही नहीं था हो क्या रहा है. हाँ आराम से सीन आराम से सब करते हैं चाय पी रहे फिर थे बैठ के. It was like a really comfortable माहौल. But हाँ, coming back to the question, so you're saying कि हाँ, you're right actually. Lots of great या chemistry on screen is between married people. But what happens when it then goes off camera and फिर भी लोग ship कर रहे हैं? Does that ever become like uncomfortable for you in your personal life, or see so it only gets uncomfortable if you let it get because to you elephant in the room is के लोगों yeah ने आप लोगों की शादी तक करा दी थी. उन्होंने कहा ये तो बस ये अब दोनों जो है ना ये ऑफ सीन है, ऑफ द ग्रिड है, अब ये तो चले गए हैं, अब ये आप देखिएगा, आप लोगों को पता नहीं है. So how did you respond to those rumors? by not responding By not responding. by not Smartest responding thing to is do, huh? that's the best way to respond is like a rumor is a rumor and with weddings and marriages is like especially when it's going to happen it might be a private affair for Yeah. anyone but everybody posts a picture the second it happens Huh. why would someone prolong not posting a picture or something like that Huh. and I feel like especially with आजकल की social media and age and with जो हम गुजर रहे हैं आप डबल चेक नहीं करते journalism that I see of especially I think we're very influenced by the Indian journalism a lot वो कुछ भी लगा देते हैं कोई वेरिफिकेशन के बगैर और लोग बिलीव कर लेते हैं तो आई थिंक हमारे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये करना चाह रहे हैं सेन जर्नलिज्म बहुत कम है बट या आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे हाउ आई टेक इट इज बाय नॉट टेकिंग इट सीरियसली बिकॉज क्या हो जाएगा जाता जाता कुछ हाँ नहीं यार, होगा नहीं कुछ नहीं होगा. वही बात है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सिक्योर हैं और आपको पता है कि ये एक दुनिया है जो लोगों ने Yeah. बनाई है और उसमें वो फैंटेसाइज कर रहे हैं कि ये दो लोग इकट्ठे हैं. ठीक है. I always feel like you're private, and that's something that I decided from day one entering this industry, and that's something my father taught me was always keep your personal life personal. And when I say personal life personal,
I mean, I don't mean कि oh you have to keep it secretive or छुप छुप के कुछ, but एक होता है secret रखना, एक होता है private रखना. You know, there's a difference in that, and that's how I've always tried to take my life ahead, especially with this career that I am in right now. That I feel like my personal life and my private affairs or whatever I do, my business is going to stay my business as long as I let it be my business. You know, if I put it out there, obviously people will talk. Obviously, like, and I don't question that idea of people talking about you, of people making rumors about you, because that's part and parcel of the field we are in. So yeah, I just take it very lightly into this, that it's still my private life, and you only know what I have told you. And you don't know what I. So you can conjure up any thought. No, I love that. I love what you're saying about secretive or private. में फर्क है. बिल्कुल सही. And whatever you put out is open to conversation. And it should be. And you should not question. कि मैं ये बात हमेशा लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आपने कोई चीज या बात पब्लिकली लगाई है और उसके बारे में बात हो रही है, तो आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज को? या तो आप उस चीज को इतना प्राइवेट रखेंगे किसी को कुछ ना पता हो, लेकिन अगर आपने पब्लिकली लगा दी है, पोस्ट लगा दी है, कुछ कर दी है, लोगों को हिंट्स दे रहे हैं आप, तो फिर जस्ट let it be. Do you think artists today and stars especially are under a lot of pressure कि लगाएं कुछ ना कुछ, बताएं, अच्छा मंगनी हुई है क्यों नहीं बताएं, या इवन खुदा ना करे जब डिवोर्सेस होती हैं बताएं, इन्फॉर्म करें, बताएं, या कुछ अगर होता है कमेंट करें, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन दें, आपने ये क्यों नहीं पोस्ट किया. Do you feel that वो भी तो आजकल बहुत है. 100%, I agree. And this just started, I feel, 5-6 years ago. It wasn't that the pressure was not very evident before that, I feel. But ये सब के बावजूद, I feel like it's who you are as a person that will always reflect upon your Instagram also, and that's how it should be. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा बात हो रही है ना, तो आप जो इंसान हैं अगर आप वही रिफ्लेक्ट करें उस पे तो बेहतरीन है. आप, मैं हमेशा ये कहती हूँ, व्हेन यू मीट समवन इन पर्सन, it should literally be reflective of who they are on Instagram. Otherwise, they're literally faking it, and आपको पता चल जाता है. और बहुत आसान है पता करना. मतलब आप 1-2 मीटिंग्स करें किसी से और फिर आपको भाई पता चल जाता क्या हो रहा है क्या नहीं. तो बहुत स्क्रूटनी है, और इस चीज का मुझे ये लगता है, how I handle it is that I am very private with also posting about it. So I like posting my vacation pictures, or like posting one day or two क्या हो रहा है क्या नहीं. बट मैं उस मोमेंट को हमेशा पहले एंजॉय करती हूँ. मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैंने आज तस्वीरें लेनी है, बल्कि कल ही ये बात सोच रही थी मैं बताती हूँ कि रोशन कॉल्ड मी, रोशन वेंट लाइक, listen, you're not posting for 20 days, people are meeting me in places and questioning me, where is she, गायब क्या हो गया, सब ठीक तो है. And I'm like, the idea that, and I am